Our education system has lot of things to do. तो कि अगर मैं टूथपेस्ट को कोलगेट बोल रहा हूँ, अगर मैं बाम को झंडू बाम बोल रहा हूँ, यू वुड हैव इमेजिन मैं कितना कंडीशन हूँ. अगर हिस्ट्री में इतने सालों से वही पढ़ा है कि ये मेरे हीरो थे. हमें आज़ादी नॉन वायलेंस से मिली, हमें आज़ादी कभी नॉन वायलेंस से नहीं मिली. हमने आज़ादी छीन के ली है. टिल द टाइम हिस्ट्री इज़ नॉट चेंज. ये जो पॉलिटिकली जो हुआ था, ये पार्टी ने वो किया, वो पार्टी ने वो किया, इट नीड्स टू बी री रिटन. That is when the kids of tomorrow will understand the values of sacrifice. Probably there were many warriors, but Chhatrapati Shivaji Maharaj जी से बड़ा कोई नहीं है. Communication, strategy and guerrilla warfare. मतलब सिर्फ ताकत के दम पे नहीं, दिमाग. उनको कोई नहीं हरा सकता था naval warfare में. And lots of history, unknown histories. Shrotagan, welcome to your podcast with Raj. Sir, you talked about naval aircraft carriers, जो कि एक ब्रांच होता है इंडियन नेवी का. Then there are nuclear war submarines, जो कि अंडर वाटर ऑपरेट करते हैं और फाइट करते हैं जरूरत पड़ने पर. मे बी खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, बट देन टू टेक द करेक्ट अनफॉर्चुनेट स्टेप. एक तीसरी ब्रांच है सर, जिसको 36 साल हुआ है बन के. पहले उनको स्पेशल मरीन स्पेशल फोर्सेस बोला जाता था. करेक्ट. फिर मरीन कमांडोज हुए और अब मार्कोस बने. सर ये क्या फितूर है सर मार्कोस, ये क्या बवाल है? सो मार्कोस जैसे आर्मी में एसएफ है, लाइक एयरफोर्स में गरुड़ है. सो मार्कोस आर दी स्पेशल फोर्सेस ऑफ द नेवी, राइट? दे आर वन ऑफ द मोस्ट लीथल फोर्सेस इन द वर्ल्ड. देयर ट्रेनिंग इज रियली टफ, their probation is really tough, their selection is really tough, and it is not for the weak hearted, right? And they are the best of the best. जैसे मैंने कहा कि 1971 में when the unit was formed, those people, how different is it from the army के special forces या गरुड़ से? These people are lethal underwater also. They can swim like now. Commodore Arvind Singh sir, जो महावीर चक्र थे, when he was those days when in Sri Lanka when they did that, he swam 12 kilometers with gun load. That is the prowess of marine commandos. They can do anything. Their trainings are so tough. They do all the operation, land operation से लेके underwater operation से लेके the aerial जो jump होते हैं वो सारे ये. But yes, they are lethal, but nice people, simple people. And luckily for me, I had the privilege of being in the same base for 2 years where they trained the Eastern Fleet. So I've seen them very closely. So how are they picked? It's like same like the naval officer, but both submariners and special forces, they have special allowances, like they get a decent sum to be a submariner or to be a Marcos, right? They wear a separate Balidan badge for the Marcos, and for submariner they wear the submariner, the dolphin badge, and of course the aviators wear the aviation badge. So they are all, of course. So Marcos are special, and they conduct. Earlier they were limited to something in 1971 and all. Earlier they were limited to to be in the harbor, ship के wreckages देखो, ये करो, कोई mine डाला है तो उसको देखो and all. But post that, now their rules have become much more offensive, So yeah. So they just follow commands, they kill, and they're nice people. Obviously. So मुश्किल वक्त commandos तक जो बोलते हैं ना, the few, the fearless. That is what is their motto, and that was by retired Commodore Vijay Singh Sir Rawat जो थे. Sir had given that. So Sir is a great human being again, and a very close senior whom so yes, so one of the toughest forces. सर हर साल गोवा लोग घूमने जाते हैं. कॉलेज की बैचलर पार्टीज होती है, कॉलेज की पार्टीज होती है ग्रेजुएशन के टाइम पे. लेकिन a lot of people don't know that Goa was liberated in 1961 again. Correct. Named as Operation Vijay, जिसमें नेवी को मौका मिला था. एंड आई बिलीव दिस वाज वन ऑफ द foremost opportunities that the Navy had, or maybe probably the first credible operation under the Indian Navy, जहाँ पे against Portuguese we fought Portugal. Exactly. Any information, any news on that, sir? To be very frank, बहुत ज़्यादा मैंने have not researched or read about it.
I know it was Operation Vijay, wherein Navy had that first chance of a direct participation pre 65. See, even in 65, जैसे मैंने कहा, उसको एक डिफेंसिव फोर्स बना के रखे थे. तो 61 में there was a prominent role played by Navy in the liberation of Goa, and I think I will have to research on that. That's a good topic to be. But many people doesn't know the story of liberation of Goa, right? And it was against Portuguese when even today, जो अब आप गोवा में जाओगे, आज भी you can see that trace of Portuguese culture over there. Even it is said that many of the Goan citizens जो है, they still have dual passport and things like that. But it took a hell lot of things to liberate Goa, जिसको liberation of Goa का war भी कहते हैं. इससे ज़्यादा info I think I had read it once, but probably इतना ही मुझे भी पता है. Probably I also will need to do some research on that. 20-21 दिनों का हुआ था सर, बमुश्किल. और आई थिंक नेवी का सबसे बड़ा जो एजेंडा था और सबसे बड़ा जो मिशन ऑब्जेक्टिव यही था कि यू नीड टू स्टॉप द शिप्स इफ इट ऑल, इफ इट कम्स फ्रॉम द पोर्टुगल. करेक्ट. बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज, देश वहाँ था, एक देश यहाँ है, सो नॉट पॉसिबल. राइट. वंडरफुल. सर, अब क्या चल रहा है लाइफ में? बस अब यही चल रहा है. So on a serious note, I'm a corporate guy. I work with a national body of shipping. Earlier I used to be in the hardcore domain of shipping. Now I had moved to the non-marine domain, like industrial. It's more of engineering. And contributing well, heading a department. Yes, so thanks to the experience in the Navy, last 15 years I'm with the organization. So it's 25 years of working experience now. And इसके साथ बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में. I'm a writer, I am a distance runner, I blog, humor is my forte, Instagramming कर लेता हूँ, LinkedIn पे रहता हूँ. Whenever time permits. So you have a show, Fauji Talks. Yeah, I have a show, Fauji Talk. I always believe now, it's how you manage yourself, like काफी लोग मुझे पूछते, सर आप इतना सब कुछ कैसे करते हो? Corporate guy भी है, you give time to your family. ये मेरा एक सिंपल सा सबको यही बोलना है कि आज भी मैंने किसी से पूछा कि ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी के पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कितना वक्त है उनके पास? ही इज ऑल्सो वेरी बिजी. 24 hours. Sachin Tendulkar होगा 24 hours. You take President of India, Draupadi Madam, 24 hours. So I take Raj Srivastava, 24 hours. I say Anil, Sandeep, जो भी है, सबके पास 24 घंटे. एक ना सबसे एक वो कॉर्पोरेट में एक उल्लू बनाने का टर्म है, लॉट ऑफ पीपल हैव कंडक्टेड लेक्चर ऑन टाइम मैनेजमेंट, है ना? टाइम में तो टाइम मैनेजमेंट इज सबसे बड़ा दैट जो टर्म है ना, दिस इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, इट इज यू मैनेजिंग इन दैट अवेलेबल टाइम. 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, तुम कैसे मैनेज करते हो? सम पीपल स्लीप फॉर 10 hours. नो, नॉट रिक्वायर्ड. 6 घंटा 7 घंटा मैक्स. उससे ज़्यादा तुम सो गए ना, इट्स अ लग्जरी. तुम लग्जरी जोन में चले गए. फिर कोई अगर 10 घंटा सोता है संडे को, यू में से कि मैं 5 दिन 6 दिन काम किया, मैं टायर्ड हूँ, सो बट यू वेस्टेड 3 hours ऑलरेडी ऑन दैट संडे, जिसका तुम और कुछ कर सकते थे. यू कुड हैव मेट योर फ्रेंड्स, यू कुड हैव गॉन आउट, ट्रैक कर सकते थे, रन कर सकते थे. सो आई ट्रीट एवरी डे इन अ वेरी वेरी यूनिक वे. मेरा मॉर्निंग रूटीन फिक्स होता है. वेकअप एट 5:30 एंड इफ आई एम ट्रेनिंग फॉर एन इवेंट, सो आई ट्रेन अकॉर्डिंगली. जिम जाता हूँ, आई गिव टाइम टू माई डॉटर, उसको स्कूल छोड़ने बस तक जाता हूँ. सो दैट इज द बॉन्डिंग टाइम यू गेट, राइट? देन कॉर्पोरेट ये, सो लोग लंच करते हैं, 1 घंटा लंच करते बैठते हैं. इज इट रिक्वायर्ड? यू नीड 10 minutes ऑफ लंच. कॉफी ब्रेक्स. फौज ने हमें 10 मिनट का लंच सिखाया. आज भी लंच टाइम ऑफिशियली वुड बी 1 hour. In that remaining 40-50 minutes, you can do something productive. You can write a blog, और ये you can catch up on your work. फिर चाय के नाम पे आधा घंटा जाके बैठते हैं. You don't need that, ठीक है. एक स्ट्रेटेजिकली आप कुछ बात करते हो तो ठीक है,
Then when I listen my podcast is कि मुझे मालूम है ट्रैफिक में 45 minutes लग गया. That is the time I don't listen to radio and all, but I listen to podcast. I listen to lot of quality stuff जो मेरे life को value add करता है, you know, wherein I can learn something. I read history सुनता हूँ, podcast of Abhijit Chawda or people like him, you know, which adds value to your life. And then घर आके, you know, you spend time with your parents, and then you do something interesting. I read 1 hour, half an hour, फिर कुछ catch up. So if you manage time ना सब हो जाता है. You can meet friends. Friends को भी meet करना अगर तुम full day उसके साथ दारू पीते बैठो, there you have lost everything. So everything should have, अगर वो करोगे ना तो time easily you can manage things. सर मैं एक चीज़ honestly बताऊँ, आपके आने से पहले ना हम लोगों की ना यहाँ पर पीठ सीधी हो गई थी. मैंने सुबह उठा, झाड़ू लगाया, बर्तन धोया, इस कमरे को पोछा लगाया. हम लोगों का कॉल टाइम यहाँ पर 2 बजे का था, 3:30 से 1.5 घंटा पहले. और मैंने बातों बातों में इनको यही कहा कि देखो यार, सिर्फ एक फौजी के आने से हम लोग खड़े हो गए और हम लोग हर चीज़ बिफोर टाइम कर रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं. फौज में रहना क्या होता होगा. Exactly. So हमारा तो you know everything is time bound, including academy days पे तो 7 मिनट की ब्रेकफास्ट होती थी या 15 मिनट का लंच होता. That is for a role, for a future role, you know. आज मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ. मेरे लिए टाइम इज प्रीमियम. इवन इफ व्हेन आई ट्रैवल नाउ आई वुड लिसन टू समथिंग, यू नो. और अगर मैं सो गया, अगर ट्रैवल में मैं सो गया तो उतना मैं कम सोऊंगा फिर कल सुबह या. That is how life is, you know. You teach these values to your daughter, sir? Exactly. I try to teach these values. And of course, she is young. Abhi How old is she, sir? She is now 17. She's 17. This August, she will turn 17 complete. Okay, she'll step into 18th. She knows everything about you that you have done and achieved, and the kind of so life you have lived. Exactly. So she's very happy, and she's a happy-go-lucky girl, and you know, like very close to me. But I don't want to impose anything on her. मैंने उसको option दिया था to join the armed forces, ND entry से. She was very interested. Later, she said नहीं, she want to, you know, see the world. She want to move into finance. And though she's a very good student, but she didn't want to do a tech job. उसको finance में explore करना है. She writes like me. She's very philosophical and things. So I could see a lot of traces of me in her. But we can't force, है ना? So how big of a support has been your first girlfriend and now wife for you, who you met at a very young age? Exactly. So Mala has been, so we were girlfriend and boyfriend जब हम, when I was in 12th standard and she was in 10th standard, you know. And तभी हमारे पास कुछ नहीं था. See, एक जो life partner जो होता है ना, when we had nothing, absolutely nothing, हम चौल में जब, and she used to stay in a building those days, imagine. मैं तो चौल में रहता था. And once when our mother came to my house to see my house, जब मैं engineering में था, तो she was shocked to see, you know, कैसे रहेंगे type. So irrespective of that, she stood by me, and of course, then when we were dating, फिर engineering में जब मैं आया, so Mala's brother is my closest friend, we were classmates and all, so he has been a great support. My sister-in-law, other sister-in-law, we all were close friends. हमारा बड़ा सर्कल था. और आप जब उनको पहली बार प्रपोज करने के तो आपको टपली भी पड़ी उनकी तरफ से. पक्का, you know, like so those days. So what I believe, एक लाइफ पार्टनर ऐसे होना चाहिए जो आपके थिक एंड थिन से पूरा वाकिफ हो, you know, आपके नस नस से वाकिफ हो. So then you are more of a friend. You know? Even today, like 18 years of marriage and 7 years of dating, 25 साल हो गए. We have a daughter. Even today we are like friends. हम लोग गाली में बात करेंगे कभी मस्ती में, you know. Our understanding, our bond is much stronger, much stronger. And that's what keeps it alive and fresh. And because I had nothing, तभी भी वो थी. आज touchwood, you know, by God's grace, we have decent means to have food and to live a lifestyle. So तभी भी she still guides. She is that support. She take cares of my, and thanks to her, कि होता है ना, घर एक घर बना है. Thanks to her I took my first house, 1 BHK जो लिया था. हम लोग शादी के पहले we had, both of us had seen that house. Then we bought our second house, you know, 2 BHK में. So she's been a great support as always, and yeah.
So सर वही तो मायने रखता है ना कि जब कुछ ना हो तब भी वो इंसान साथ हो, एग्जैक्टली तो सब वो कुछ हो। बहुत है जो ऐसे भी दोस्त है जो कुछ नहीं था तब भी दोस्त है, आज सब कुछ है तो भी दोस्त है. So that is how. Wonderful, sir. Wonderful. God bless you and your family, sir. Yeah, thanks man. And Thanks sir, so much. any favorite war movies or any movies in general that you like to watch? So yes, of course, I'm a big fan of comedy movies. You know, I love to unwind. है ना? तो बहुत सारी मूवीज है जो बार बार देख सकते हैं ऐसे. स्पेशली द गोलमाल सीरीज जो है ना, वो दैट हैज बीन ऑलवेज अ फेवरेट. गोलमाल सीरीज और फिर अपना हेरा फेरी सीरीज हुआ, फिर अनिल कपूर और नाना पाटेकर की जो सीरीज है ना, वेलकम वाली सीरीज. दो इट मे बी इलॉजिकल बहुत कुछ, बट यू गेट लाइट एंड यू नो ये. एंड देन आई एम अ बिग फैन ऑफ मराठी मूवीज एंड मलयालम मूवीज ऑल्सो. मराठी शोज जो है, चला हवा ये उद्या या मी पण बघतो सर, खूप छान. So that unwinds, you know, that unwinds. And जी मराठी पे अभी जो शो आ रहा है उसका नाम क्या है? हास्यजत्रा. So that is also, so it unwinds you. And then Malayalam movies, you know. So I know 7 languages, English, Hindi, Marathi, Tamil, Malayalam, and I understand Telugu, I understand Gujarati, and I speak Bhojpuri. నా పేరు రాజ్ సార్, మీరు ఎలా ఉన్నావు? So that is how I keep on you know learning a lot of things. Sir, I think these are 8 languages, not 7. 8 languages. बाकी मैं 2 बोल नहीं सकता हूँ. Since I was in Visakhapatnam for 4 years, I understand Telugu जितना समझना है. But you can't speak. I can't speak. You can speak Malayalam, you can I speak can speak Marathi. Malayalam, Bhojpuri, Marathi, Tamil, Malayalam, कितने हुए? 5. English, Hindi. English 6. Then I can understand Gujarati, I can understand Telugu. And you learned these languages while you were in service? Yeah. Bhojpuri and Marathi, because I'm born and brought up Marathi. Bhojpuri is जहाँ मैं predominantly रहता था. Marathi and Bhojpuri were the community which I grew up. So that's how friends are from Uttar Pradesh and Marathi, you know, hardcore Sangli types वैसे. So that's how you learn, you know. Yeah. You learn. So I believe in learning. आज भी सीखता हूँ. You know, so many things to do, so many things to learn. And कभी-कभी ऐसे लगता है साला जिंदगी छोटा हो जाएगा, है ना? Yeah. And then I know that अभी I am 47. 3 more years are there. 50, the moment of 50 cross हो जाता है ना, you go into next bracket. आप कितना भी handsome दिखो, बॉडी बनाओ तो 50 बुढ़ा हो गया टाइप. But you look very young, sir. You look very handsome and you look very fit. That's fine, but you know, एक barrier होता है. But irrespective of that, so I take a lot of inspiration from my father. He's 78 now. कल ही बर्थडे था उनका. 79 में एंटर किया, but he's fit, happy, कोई टेंशन नहीं. He walks for 2 hours in a day. ये वो करता है. So your parents must be so proud of you, no? Yeah, equally for all 3 brothers. Thanks to mother, we are all educated. We are a very close family. दोनों भाई लोग पास में रहते हैं भांडुप में. They live in Bhandup, and I live just Sonapur cross करके मुलुंड. So we meet often. My brother-in-law, वो भी same complex में. My sister-in-law. So we are a very close-knit family. A lot of friends. Running के friends है. Close group of 6-7 friends who are all well-to-do and they are like very senior positions in corporate. But yes, friends है तो friends है. That's beautiful. Yeah, that's. So you were 20 when this movie released Border, and then probably you must have been 24 when this movie released known as LOC Kargil. Sir, इन 2 movies का कितना बड़ा impact रहा है? मेरी लाइफ में Border played a very important role, definitely. And you know, बहुत सारी movies. LOC Kargil तो खैर बाद में थी. There was this movie Refugee बोल के. Abhishek Bachchan, Kareena Kapoor. The debut of both of them. So I also debuted with them. So we were posted at Bhuj. Posted नहीं, हम BSF के साथ attachment पे थे when as a sub lieutenant. So if you see my Instagram, JP Datta साहब की movie थी. Sir's elder brother was ex-Air Force, a war veteran. And when we went there, we were invited on the sets. So that is the first time I met Abhishek, Kareena, and Jackie Shroff. So Kareena और मेरा एक प्यारा सा फोटो है Instagram पे, सब घूमता है बहुत हो. So
अभिषेक के साथ. So Abhishek was, first movie थी. They were so cordial, and Abhishek was full of respect for us. And yeah, we had a great time वहाँ पर Refugee के set पे. We were there with them. We had dinner with them, and definitely movies play a very important role in nurturing. Because आप कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, मूवी के जो 3 घंटे में जो लोग हंसते हैं तो हम सब हंसते हैं, और रोते हैं तो वी हैव आवर ओन इमोशन. सो मूवीज प्ले अ वेरी पाइवटल रोल. मेरा ओनली रिग्रेट क्या है ना लोगों से या सबसे, उनको अब लाइफ से बड़ा मत बनाओ, या एग्जैक्टली, है ना. तो आई बेग टू डिफर एनीबडी कॉलिंग शाहरुख खान हीरो. आई बेग टू डिफर एनीबडी कॉलिंग विक्की कौशल हीरो. दे आर नॉट हीरोज, दे आर एंटरटेनर्स. हीरोज का जो दर्जा होता है ना, वो आप आर्म फोर्सेस या ऐसे लोगों के लिए बचा के रखो जिसने हीरोइज्म किया हो. जो एक्टिंग जो करते हैं उनका काम है ना, इट्स देयर प्रोफेशन, दैट इज देयर प्रोफेशन. सो हीरोज का जो दर्जा है, यू कीप इट फॉर स्पेशल पीपल. सर मतलब परम बलिदान विजयंत थापर इन्होंने दिया. एग्जैक्टली. सो दे आर द हीरोज, एग्जैक्टली. बाकी सब आप लोग एंटरटेनर्स हो. And you won't believe this, when we were doing the setup, this is exactly what we were talking about. Exactly we were So talking I about. respect, everyone, but our people are crazy, है अभी क्या कर Larger than सकते हैं. life, yeah. There's this तो अगर phenomena. आपको एक परमवीर चक्र को खड़ा करो और वहाँ एक आप ऋतिक रोशन को खड़ा करो, 100 में से 99 ऋतिक रोशन के पास जाएंगे. एक बंदा गलती से परमवीर चक्र के पास आ गया. But now I feel, sir, the times are changing. Yeah, thanks to social media. Social media has given a lot of awareness, and things are changing. मैं नहीं बोल रहा हूँ, टाइम लगेगा और टाइम लगेगा. जब तक वो हिस्ट्री किताबों में नहीं आता है ना ये स्टोरीज, सो आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम हैज लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. अगर मैं कंडीशनड होके, अगर मैं टूथपेस्ट को कोलगेट बोल रहा हूँ, अगर मैं बाम को झंडू बाम बोल रहा हूँ, यू वुड हैव इमेजिन मैं कितना कंडीशनड हूँ. तो मैंने अगर हिस्ट्री में इतने सालों से वही पढ़ा है कि ये मेरे हीरो थे, हमें आज़ादी नॉन वायलेंस से मिली, हमें आज़ादी कभी नॉन वायलेंस से नहीं मिली है. हमने आज़ादी छीन के ली है, ये किसी ने नहीं बताया. 1946 का जो नेवल अपराइजिंग थी, या INA जो सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी थी, हमने छीन के लिया. और ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो नंगे हो गए. दे हैड नो मनी, नथिंग. दे रियलाइज कि अभी इंडियंस आ गए करके. दैट वाज द रीज़न फॉर देम टू गो. ये नहीं कि हमने नॉन वायलेंस में यहाँ 4 झापड़ मार लिया, बोला यहाँ भी मारो, ऐसे नहीं चलता है भाई. सो वी हैव बीन फेड दैट इन हिस्ट्री इतने सालों से. HRA, तो जब तक आप ये हिस्ट्री को बदलोगे नहीं, और जब तक आप बताओगे नहीं वॉर्स के बारे में, हमारे हीरोज के बारे में, या अभी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में हम इतना, दैट इज व्हेन यू कम टू नो द वेलर. ही इज द ग्रेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट. The first naval chief of India, sir. First naval chief of India. Then Kanoji Angre ji जो है, is the first admiral of the Indian fleet. Then there was कुंजाली मरक्कर बोल के. We are a strong, brutal naval force, and probably there were many warriors, but छत्रपति शिवाजी महाराज जी से बड़ा कोई नहीं है. इसलिए भी हम मरेंगे या तुम मरोगे, देश मरेगा, आज से 1000 साल भी there will be only one छत्रपति, and that would be छत्रपति शिवाजी महाराज. आज भी जब हम पढ़ते हैं ना, आज भी गूज बम्स आता है. So when you listen to any povadas, or when you listen to any छत्रपति शिवाजी महाराज के ये सुनते हैं ना, when रस जो बोलते हैं जिसको, you can see the valor in which that warrior had led his life. And of course later Chhatrapati Shivaji Maharaj, they were the people, and of course we have many other warriors. Absolutely. Because I have grown up listening to Chhatrapati Shivaji Maharaj story, and when today 47 years में, so many years later, I still have that goosebumps. Because वो ठीक है हमारे हिस्ट्री बुक में कहीं तो बताया था, बट कितने और हैं उनके बारे में बताने के. टिल द टाइम हिस्ट्री इज़ नॉट चेंज. ये जो पॉलिटिकली जो हुआ था, ये पार्टी ने वो किया, वो पार्टी ने वो किया, बहुत कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन है उसमें. It has to change. It needs to be rewritten. It needs to be rewritten. That is when the kids of tomorrow will understand the values of sacrifices. और सर उस वक्त पर जो घटा है वो आज हम जी रहे हैं. अगर स्वराज्य वहाँ नहीं बनता तो आज हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाते. And so for me, Chhatrapati Shivaji Maharaj is someone's true definition of warrior, in terms of he was a guy who at the 15 years of age won his first fort.
कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी एंड गुरिल्ला वॉरफेयर. मतलब सिर्फ ताकत के दम पे नहीं, दिमाग. एग्जैक्टली, वो पहले था उनका. वेरी ट्रू. एब्सोल्युटली सर. और कनोजी आंग्रे जी के बारे में तो ये कहते हैं कि देयर इज अ नेवल बेस आईएनएस आंग्रे नेम्ड ऑन हिम. उनको कोई नहीं हरा सकता था नेवल वॉरफेयर में. एंड सर देयर कॉम्पिटिटर्स वर पोर्टुगीज, फ्रेंच. पोर्चुगीज, फ्रेंच जो भी थे, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आए, नहीं उसके पहले, वो तो पहले बाद में थे. कोई उनको हरा नहीं पाया, कोई उनको हरा नहीं पाया. एंड सेम वाज फॉर द कुंजाली मराक्कर ऑल्सो, सो. बट हाँ, कूप और उसके बाद जो हुआ, उनके बाद जो भी हुआ, इवन कनोजी आंग्रे सन जो थे, ही ऑल्सो वॉज अ वॉरियर. ही फॉट द नेवल वॉरियर दे से. Okay. So we have lots and lots of history, unknown histories. And thanks to now, yes, there are some movie houses or the media houses who's bringing these stories, especially the Marathi movies. Absolutely. Abhi Lot there's of this Marathi new movies. movie, sir, which is Subhedar, which is going to directed release. by Mr. Lanjakar, Correct. and it's going to release 18th. 18th ko, that's Yeah, right. it's upon the onsetting that happened. Tanaji Malasure ji. Exactly. Subhedar Tanaji Malasure. It's upon that. Then he's also made Pawan Khind. He's True, also Pawan made Khind Sher was- Shivraj. Exact. So made all these movies. जो ये जो battles है ना sir, वो battles को लेके उन्होंने movie plots में convert किया है. Exactly. And as you saying, I sir truly believe that movie mediums are the biggest mediums right now, Exactly. with right intent to Exactly. give that push. Because अब लोगों को सिर्फ विक्रम बत्रा साहब नहीं मालूम, उनको कैप्टन नवीन नागप्पा जी भी मालूम है, Exactly. जो उनके साथ में थे. Exactly. So I think it's going in the right direction. True. And it should. 2-3 पहलू रह गए हैं सर, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका. The vices of an Indian soldier, खाने पीने का शौक रखते हैं. And मुझे पता है कि there's this very big nostalgic association of you with Old Monk, और बहुत सारे आर्मी जवान्स का है. कुछ बताओगे सर? So I just want to clear one thing. Lot of youngsters ask me, बोलते हैं सर अभी हम वेजिटेरियन हैं, दारू नहीं पीते, फौज में जाने के बाद नॉन वेज खाना पड़ेगा या दारू पीना. See, nobody forces you. We are a फौज टेक केयर्स ऑफ दैट एवरीथिंग. कोई वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाएगा, ऐसा ये नहीं है. बट हाँ, अगर आप स्पेशल फोर्सेस वगैरह में जाते हो, यू हैव टू सर्वाइव ऑन जंगल थिंग, राइट? प्रॉब्ली दैट वुड बी एन एक्सेप्शन. दारू भी कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता, बट येस देयर आर ट्रेडिशंस. ओल्ड मॉन्क, येस, एज यू राइटली सेड, ओल्ड मॉन्क तो खून के बदली ओल्ड मॉन्क बहता है हमारे इसमें. एंड फॉर इंस्टेंट जो ओल्ड मॉन्क के फाउंडर है, फाउंडर के जो ब्रदर है, कपिल मियाकिन बोल के, he was a brigadier, army brigadier. He was retired brigadier who was a VSM and later Padma Shri also. He took over after his brother's death. And जैसे बोलते हैं ओल्ड मॉन्क इज एन इमोशन फौजियों के लिए. सो जैसे रम कोला जिसको बोलते हैं ना, with a disclaimer, you should, I'm not promoting it. Absolutely, sir, I not understand. promoting Don't it, worry about that. But as a Fauji, it's an emotion. It's right? an emotion. It's truly an emotion. Nevertheless, जो भी vices है, it has to be, I won't call it as vices. अगर आप controlled इसमें कुछ करते हो, fine. Nothing can make you slave. आज करीब 1-1.5 महीने हो गए. I have never touched any form of alcohol or any form of non-veg or even milk product. कभी कभी ऐसे cold coffee आज पी ली. So क्या होता है ना, the moment you have control over thing, that is how you should be, irrespective of anything, any damn thing, even it's sex or anything. आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए. जिस दिन वो आ गया ना, वो अल्कोहलिक जो बेवड़े होते हैं और जो शौक से पीते हैं ना, उसमें वही डिफरेंस है. जो समन उस अल्कोहलिक, जिसको हम बेवड़े बोलते हैं यहाँ पे मुंबई अलग, अल्कोहल उनको पी जाता है, एवरीडे हाथ कांपता है, वो उसके बाहर दुकान के बाहर खड़ा रहेगा. जो शौक में होता है, आज ठीक है, आज नहीं है तो नहीं है, सिंपल. आज मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ, इतना 30 लेके मुझे पूरा पार्टी में घूमना है, आई विल फॉर दी दिस थिंग. बट ट्रस्ट मी, नोबडी फोर्सेस यू. एंड इट इज़ फौज है तो इट इज़ जस्ट अ कल्चर विच हैड कम. एंड देयर वुड हैव बीन रीज़न फॉर पीपल टू हैव रम एंड ऑल. देयर आर ट्रेडिशनल रीजन्स. जब आप पोस्टेड होते हो ठंडी जगह पे एंड ऑल, इट हैड एक्टेड एज अ sort of medicine long back. That is the history, but it became a tradition, right? So सर, यहाँ पे तो लोग छोटे छोटे इवेंट्स में बोतलें खोल देते हैं. आप लोगों ने तो कितनी बड़ी जंगें जीती है, तो इतना तो जश्न बनता ही है. yeah, so
So no one is promoting alcohol over here. Nobody is promoting any intoxicants. Neither sir nor me. यहाँ सिर्फ एक इतिहास की बात चल रही है जो शायद आपको बात करनी चाहिए, जानना चाहिए उस बारे में. करेक्ट. तो किसी ने खूब कहा था, एक रील देखा था, उसने बोला था कि अगर सपोज हम ओल्ड मॉन्क क्या दारू पीना छोड़ दे तो कितने लोगों का नुकसान होगा, पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कितने लोग रोड पे हो जाएंगे. तो उन सब का सोच के हम पीते हैं करके. On a lighter note. But yes, as you rightly said. Yeah. Sir, कुछ नाम है. And these are your colleagues, your comrades. Most of them you have talked with. Most of them you have known. Most of them you have never met but admired. Give one word for them. Or just say anything that you feel for them. Let's not go into the incidents and the martyrdom and the adventures or the life larger than life legacies they have, but just one word. Captain Vikram Batra. Sher Shah, that is the Captain Manoj Pandey. परमवीर चक्र. बिकॉज वाई आई से दैट, जब वो SSB में उसको क्वेश्चन पूछा था मनोज सर को कि वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी, बोला कि आई वांट परमवीर चक्र, एंड ही वन दैट. सो परमवीर चक्र डिफाइंस हिम. और सर उनको ये भी बोला था, पता है कैसे मिलता है? उन्होंने बोला पता है कैसे मिलता है. True. Yeah. Just to complete your story, sir. Major Mohit Sharma. Mohit Sharma, the best would be Iftekhar. So Iftekhar was the name he had disguised when he went with terrorist and killed terrorist. So there is a movie which is coming called Iftekhar. Sir, would you want to tell about that Kawa incident that he had? So yeah, Mohit ka story is Mohit's brother is a close friend, Madhur now. And he was crazy. मतलब अलग ही था मोहित. And one instance where he stayed with terrorist, disguised as covert operation में disguised as terrorist. उन्होंने पहचाना नहीं. So imagine अगर कोई आपको पहचानता नहीं है तो आपको लैंग्वेज आना चाहिए. How proficient you would be with that language. And to stay with terrorists for so many days, उनका खाना बनाना, उनके इर्द गिर्द रहना, उनको मॉनिटर करना, एंड वन फाइन डे मौका मिलते ही दोनों को ठोक देना, Point blank. उसकी बॉडी के ऊपर बैठ के कावा पीना. देन कमिंग बैक टू द यूनिट. दैट इज मोहित फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स लेटर मोहित succumbed later when he fell in the line of duty, वो अपने कॉमरेड्स को बचाते हुए he had succumbed. That is what is the greatness of Mohit and many of the comrades like him. Sir, he attained Shahadat during one of Kashmir operations, right? That's right. All right. The next name for you is Major Sudhir Walia. Bravest of the brave. And there's a book called Kumar by Jayashree. Jayashree is a close friend. Probably one of the most lethal officers of the Indian Armed Forces. Sudhir Walia के तो legendary है. He's legendary. Sir, Rambo बुलाते थे ना उनको? Rambo बुलाते थे, and अलग ही थे, like when he went to Kargil War, he was a ADC to then Army Chief, and he had told कि मेरा requirement वहाँ पर है करके, यहाँ नहीं करके. And that's how he went. Amazing. Major Vivek Jacobs. So Vivek is, Major Vivek Jacobs को मैं भगवान बोलता हूँ. I remember during COVID, I was the second one to do his interview, a podcast. First was done by Nirmit, and I was the privileged second one to do. Though Vivek is junior in service to me, but I say he's a monk. Uska perspective is totally different, and of course the experiences he had with 9 and 11. That's why he's a cult. That's why he's a cult, and now he's doing a wonderful job for law and empowering various citizens. So Vivek is cult, and and glad that he's a good friend, and at the nick of phone, anytime I want to speak him, Vivek is there. So yeah. Brigadier Shekhawat. One of the most decorated officer. And recently when I read about him, crazy, sir is like, ऐसे भी होते हैं इंसान, it was goosebumps when I read about him, whether it's adventure, whether it's war, whether it's physical fitness, whether it's operation. One of the most decorated officer of the Indian Army,
a Kirti Chakra, Shaurya Chakra, VSM, Sena Medal, whatnot. And lastly, sir, a person I truly admire because even though he had a short service period, but right now with his words, with his expression, with his braveness and sheer honesty and passion towards Indian Armed Forces, he's echoing it out across borders. Major Arya Saab. Yeah, Gaurav sir, of course, in my interview with him when I went to his studio also, I told him that we all admire as a generation, though he's senior to us, uh, he's a hardcore nationalist. Fauj mein reh ke bhi, and then now he's again Brigadier Shekhawat's equivalent, batch equivalent. Shekhawat sir was from IMA and he's from OTA. He's charisma, when you speak to him, नेशनलिस्टिक जो बोलते हैं ना वो ऐसे उनके आंखों में दिखती है, उनके बातों में, एंड ट्रू इवन आफ्टर शेडिंग द यूनिफॉर्म वॉट एवर ही इज डूइंग एंड ही इज हाईलाइटिंग द आर्म फोर्सेस. व्हेन पॉडकास्टिंग वगैरह अभी चालू हुआ है, सो सर तो तब से कर रहे हैं व्हेन व्हेन थिंग्स पीपल वेर नॉट अवेयर ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो है. तो थैंक्स टू पीपल लाइक हिम हु इज डूइंग सच वंडरफुल जॉब and his wonderful show called Gaurav Arya Talk, and his channel also, he has a channel, I guess Swaraj channel hai na. So yeah, all love for him. Yeah, sir. So just one hypothetical question, what would you say if you would have had gotten to meet or would meet ever Mr. Sam Manekshaw, Sam Bahadur, Field Marshal? I mean, प्रोबेबली इफ बोलेंगे ना कि एक कुछ लाइफ में आपने यू हैड लीव्ड इंसान का आपने जन्म लिया, आपने क्या मिस किया, तो प्रोबेबली वन ऑफ दोज थिंग्स वुड बी वो एरा में नहीं पैदा हुआ जब व्हेन ही वाज अलाइव. दैट वुड हैव बीन द बिगेस्ट थिंग इफ एवर आई वुड हैव मेट हिम. ही इज अ लेजेंड एंड हु स्टूड बाय द ethos of the armed forces. Amazing stories you have about Sam, जो प्यार से उसको सैम बोलते हैं. He is the legend of the Indian Armed Forces. There won't be another Sam Bahadur. बहुत सारी stories हैं. The way nobody could tame him. जैसे बोलते हैं ना, whether political हो, इंदिरा गांधी हो, anybody. So Sam Bahadur का story is always there. So that is Field Marshal Sam for you. That's wonderful, sir. That's wonderful. So this was the short session. I hope you enjoyed it. Yeah, fine. And lastly, sir, पाकिस्तान में जब से आज़ाद हुआ है तब से पता नहीं कितनी जमहूरियतें बदल चुकी है. हिंदुस्तान तब भी आज़ाद देश था, लोकतांत्रिक देश था, आज भी है. हमारी आर्मी दुनिया में तीसरी नंबर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मानी जाती है. 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल है. Why is it that, what is the biggest difference between the Pakistani army and the Indian army? We have always been servers. We have always abided to our tasks, to our profession, to our dignity, and to our duty. Whether the army on that side of the land has always exploited the powers given to them by their ain, as they call the constitution, that they do not follow. और martial law ज़िया उल हक के टाइम पे तो उसे बर्खास्त भी कर दिया गया था. It was complete martial law. Why do you think, sir? What's the difference? Because बहुत सारे जो जनरल्स थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और फिर वो पाकिस्तान में जाके भी बसे. Lot of them were the alumni of IMAs and the NDAs, ये यहाँ के why that difference? One of the primary difference is हमारा जो culture है ना, जो भारतीय culture जिसको बोलते हैं, the land which we live, our democracy is so strong, and our sovereign is so strong, our republic is so strong. Probably our people are good, our people are good, and whoever जो हमारी तालीम हुई है, जो भी एकेडमी से हम आए थे, वो जो एकेडमी से या जो तालीम हमने रखी है इतने साल, probably that nerve which carries you from the academy and other thing, that prevents your armed forces to make a coup or to take over, right? And the democracy, of course, the democracy system, our democracy system have never failed. The system had never failed. Turmoils happen, पार्टियां बदली, 2 दिन में गवर्नमेंटें गिरी, but the process remained the same. The process of election, process of voting. See, political turmoils happen, parties aligning. Suddenly some parties whom we have voted, we never wanted other parties to come. All of them are coming together and making something, a government.
that keeps on happening. But the ethos, the culture, the lifeline runs in the democracy is the people who runs that democracy, and we all are the people, and that is the beauty of people come and try to disturb this through turbulence, through riots, and through many other things, but we bounce back so fast. And I'm sure कि had it been done bit wisely, agar we would have been a superpower long back, long back. Somewhere our political differences, and yeah, that's good for democracy and good for this thing, but in that bargain, if things like corruption and things would have been not there, we would have, बोलते ना, ढाल ढाल पर सोने की चिड़िया, जो पहले भारत था, शायद हम आज भी वही होते. हम जरूर होंगे सर. And I'm sure I strongly believe that it will happen. But sir, I truly believe that everything, love and respect to the Indian Armed Forces, no doubt about that at all. But, I watch and consume a couple of podcasts that, youth of Pakistan does. One of them is the Pakistan Experience. And there's this Daniel Chaudhary or somewhere. सर ये लोग ये सारी बातें मेंशन करते हैं, वो लोग अपनाते हैं अपनी गलतियां, और वो लोग बड़े बड़े जर्नल या गवर्नमेंट ऑफिशियल बड़ी बड़ी पोस्टिंग पे जो उस वक्त बैठा हुआ करते थे, उन्हें बुला के ये सवाल करते हैं, एंड दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, कि आज वो जो भुगत रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी गलतियां थी जो उन्होंने उस वक्त की थी. सो डू यू थिंक कि आसार है बदलेंगे, या फिर इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम्स दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ, द क्राइसिस दे आर गोइंग थ्रू? यू टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान? मुश्किल है, over the years it has not happened, and now last when I read or heard, there is a real danger of that country splitting into 3 or 4. That was the last I had heard, probably when I was with Gaurav sir's show. That was the time when I heard this. So since I don't follow the politics of Pakistan, I won't be able to comment, but I'm sure it would be very difficult. Sir, Imran Khan is in jail. Exactly. Imran Khan is. Yesterday, his wife was allowed to meet him. And as long as हमको तकलीफ नहीं दे, तो we are not. टुकड़े कौन करेगा पाकिस्तान के 3-4? करेंगे. जय हिंद. जय हिंद. All right. कैसा लगा सर आपको? Good fun. मजा आ गया, है ना? टाइम पता नहीं चलता है. सर मेरे 5वीं क्लास में ना हिंदी की किताब में एक लेसन था, एक चैप्टर था, अब्दुल हमीद परमवीर चक्र 7 टैंक्स फोड़े थे जो कि अमेरिका ने सप्लाई किए थे टू पाकिस्तान ऑन जस्ट एक कार होती है उस पे माउंटेड था वो मिसाइल. ही गॉट परमवीर चक्र. जब सोल्जर्स हु आर इन ड्यूटी एक्टिवली इन डिफेंस मिनिस्ट्री, सीनियर मेंबर्स, जब आप लोग ये सब सुनते हो कि लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, the differences that they fight towards, and then they call themselves proud Indians or whatever they want to call themselves. I'm not talking about a particular group or XYZ. I'm just saying when 2 different sects of ideologies and 2 different sects of people fight against each other, how does it make you feel, sir? Yeah, see, when we joined the academies, and when we see, I follow a religion which I am really proud of, and I'm a Hindu, and Hindu Rajput rather, Nair जो बोले. I am proud of my existence, right? And मैं नहीं चाहूँगा कि जो मैं religion follow करता हूँ उसके against कोई बोले. बिल्कुल सर, ये कोई नहीं चाहेगा. At the same time, I don't want to fiddle around with anyone who's following a particular religion. वो उनका ये है. सो फौज में हमें हमेशा सिखाया गया कि हमारे फौज के यूनिट्स में भी इट्स ऑलवेज अबाउट सर्वधर्म स्थल बोलते हैं. वी डोंट हैव अ मंदिर और अ मस्जिद और अ चर्च सेपरेटली. अंदर एक ऐसे यूनिट होता है विद एवरी गॉड इज देयर, whomever you want to pray, you pray, right? So there has been many instances, particularly in army, where एक particular regiment है dominated by one community. उसकी commanding officer and officer would be from other community, So it has been like that for the armed forces. And जब हम जाते हैं officer है तो we are an officer, right? I follow my religion very strongly. Other officer may follow, other men would follow his religion strongly.
as long as it doesn't impact our work ethos or work this thing, and our common thing is कि दुश्मन को मारना है करके, right? So as long as that doesn't happen, I don't believe that it should be. Now, when you say people fight with respect to communities and other things, it's their choice, yeah, you know. And it's sad, no, sir. I won't say sad or right or wrong. It is their choice, you know. Thanks to the media and all those things, it's pretty dominant this side. But yeah, I won't be able to comment on that. It's fine, sir. As long as मैं फौज में हूँ as a फौजी, when I have trained with people, I've served with people, as long as we follow our own religion, we respect the other religion, our common goal should not be hampered, you know, in fauj. So that is the take which we have been brought up. I understand, sir. I understand. You couldn't have put it more rightly. And I understand what you exactly mean and what you truly feel. We should all be proud of our identities, who we are, where we come from. But when our हमारी जब आबरू पे अगर कोई हमला करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए. Exactly. एंड आई थिंक सर हिंदुस्तानी फौज तो इन सारी चीज़ों से बहुत परे है. मिशन ऑब्जेक्टिव चोटी पर चढ़ना है, कैप्चर करना है, वही करना है. बंकर कैप्चर करना है, वही करना है. अगर कराची पोर्ट पर जाके खड़े रहना है तो वही करना है. और सिंपल सा ये है कि इफ आई एम गोइंग फॉर अ वॉर, अगर मैं कहीं कतरा गया दुश्मन को मारने से, सो द फर्स्ट थिंग इज आई हैव टेकन दैट ओथ कि मेरे जो सोल्जर्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो सीनियर, दे विल किल मी फर्स्ट, यू नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर आई एम. मैंने कतरा दुश्मन को मारने, मैंने कतरा अगर आतंकवादी को मारने के लिए मेरा हाथ कांपे तो पहले वो मुझे मार देंगे. दैट इज द ethos we live in, right? You can't desert. Exactly, you can't desert. And joining Fauj is not easy, you know. ठीक है, selection process is one thing. Being a Fauji is one of the toughest thing. It's all about sacrifices. It's all about ideologies. It's one of the toughest passion you follow, you know. I won't say it's a job, but it's a passion. और सर कुछ लोग तो इसलिए ज्वाइन करते हैं ना कि वो परम बलिदान दे सके, वो मौका मिले. Exactly. ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि परम बलिदान दे सके, you know. सर डोंट यू कंसिडर योरसेल्फ फॉर्चुनेट कि आप जिस टाइम पर आए 22-year-old यंग कैडेट, आपका पहला पोस्टिंग वाज इन अ वॉर सिनेरियो. सो यू नो, अभी जब सोचते हैं ना तो ऐसे सोचते हैं कि काश आर्मी में होते करके, यू नो, सेम टाइम, एंड देन प्रोबब्ली इफ यू वुड हैव बीन इन इन्फेंट्री एंड ऑल, यू वुड हैव गॉट अ चांस टू बी देयर. वो एक रिग्रेट होता है कि काश आर्मी में होते तो तभी यू वुड हैव बीन एट अ डिफरेंट प्लेस. But nevertheless, you know, you love Navy and all the armed. We love you, sir. Thank you for your service. Thank you for everything. Thank you so much, and thanks to all of you, all three of you. You know, though Anil and Sandeep may not be directly here, thanks to both of you. Anil Shinde and Sandeep, without them, this podcast and the previous one and the future ones that we're going to shoot, it's not gonna be possible at all. It's a teamwork, just like the Indian Army way. And कोई फीडबैक सर, आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Good experience in a very humble setup, I would say. You know, I've been to many podcasts and there are extravagant setups and everything is good. Everything is nice as long as the conversation is good and the team is good, right? The intentions are good. So I'm glad that it was a very well-researched podcast. You had in a lot of information, and I love such things where people come irrespective of, you know, both the interviewee as well as the interviewer, both are prepared and they know what they are speaking. One is something called impromptu, wherein you speak and this thing. One is something when both are informed and when both are speaking, right? And yeah, so it was good, it was fun. नहीं सर, एक लम्हा है बस आपसे सर, वो मतलब जानना चाहूँगा, महसूस करना चाहूँगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. समुद्र है, आपकी वॉरशिप है, आप खड़े हो, चांद है और गुजर रहा है, क्या फीलिंग होती है सर? So when you are on the deck of the ship on Raat, you feel lonely, you know. You feel lonely when you are at sea, because when you are sailing for long, you see same set of people, right? And when you are at the midst of sea, ultimately you are a human, you know. A Fauji honge, fine, you know, you have been, but yeah, you miss. There are emotions, you know, and there is nothing other than your Fauji comrades and all. They are closest to you when you are there. But family and friends are the biggest thing, you know, and you miss. And trust me, there is nothing more than your family. Right? Absolutely. Of course,
देश से बड़ा कुछ नहीं है. नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज. नेशन के आगे तो कोई भी नहीं है. फैमिली भी नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं. बट यस, योर फैमिली इज समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू. एंड उनकी अस्मिता, उनकी डिग्निटी, जैसे आप देश की रक्षा करते हो ना, दैट इज हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट? That is what keeps you stronger and sane, right? So yeah, so that's my take on that. Thank you, sir. It was an honor. Likewise, thank you so much, and wishing you all the best for your future podcast. Thank you, May sir. grow and grow and grow. Yeah. Thank you, sir. Love you, sir. Thank you for your service. Jai Hind. This was your podcast with Raj featuring Lieutenant Commander Bijay Nair. Jai Hind.